4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हमने देखे हैं सिटी क्रिकेट से, और अब बारी है ग्रामीण के क्वार्टर फाइनल्स की। ग्रामीण क्रिकेट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच आपके सामने है। साई स्पोर्ट्स खारबाव बनान वीर तानाजी दापोडे। यस, हर्षल शिवारी खारबावरनं साई स्पोर्ट खारबाव संघासाठी तिने हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. हर्षल शिवारी, आपलं हार्दिक स्वागत है. इस क्वार्टर फाइनल मैच का टॉस जीता है दापोडे के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कल रात बहुत अच्छा प्रदर्शन वीर तानाजी दापोडे टीम का रहा। राजन पाटिल की शानदार बैटिंग भी देखने को मिली। दीनानाथ की गेंदबाजी लाजवाब रही थी कल के दोनों मैचेस में। समय काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि समय के मामले में सहयोग करें। 20 मिनट के भीतर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं। 4-4 ओवर का ये मैच। साइश खारबाव टीम के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। करण और उनके साथ प्रणय पाटिल। पहला ओवर लेकर दीनानाथ, पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। आगे रखी हुई गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, मोटा सिरा लगा है। शॉर्ट थर्ड मैन पर, इससे पहले कि फील्ड किया जाता और थ्रो किया जाता। एक तेज सिंगल चुराने में कामयाब हुए दोनों भी बल्लेबाज। येस, एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला धावाचा चेंडू आलेला नाही. शॉर्ट थर्ड मॅनला जातोय, तोपर्यंत मात्र एकच धाव घेण्याची संधी, एक चिकी सिंगल पूर्ण केली जाते. दीनानाथ ने कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी और आज भी शुरुआत तो पहली गेंद बहुत अच्छे डाली है उन्होंने। पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। इस बार शफल करते हुए हुक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, खाली क्षेत्र में लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। 4 रन। शॉट बनाया गया है। गवली सर, देखा जाए तो ये गेंद बहुत अधिक शॉर्ट पिच नहीं थी, लेकिन चूंकि रफ्तार ज्यादा नहीं है गेंदबाज के पास, समय मिल गया। येस, पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये भरपूर वेळ होता, चेंडूकडे शेवटपर्यंत बघितलं आणि हुकचा फटका खेळला आणि चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे. 4 धावांसाठी चौकार. तिसऱ्या पंचांकडे मागणी करतायत. यस, चेकसाठी तिसऱ्या पंचांची मागणी करतायत. तिसरे पंच अजीम हमदुल्ले जात आहेत. गेंदबाज की बॉलिंग एक्शन पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाया गया है बल्लेबाजों द्वारा। ऑन फील्ड अंपायर से इस मैच के लिए शिवराम मोएती और उनके साथ दिनेश नाइक, और अब तीसरे अंपायर बीच मैदान में जाते हुए अजीम हमदुल्ले। अंपायर्स का जो रोल है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। बढ़िया अंपायरिंग रही है, और सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो होता है वो अंपायर्स का ही होता है क्रिकेट के खेल में। उसके बाद मुझे लगता है कि स्कोरर का होगा, क्योंकि स्कोरर को भी हर गेंद देखनी पड़ती है। हर एक गेंद का और रनों का हिसाब किताब उनको रखना पड़ता है। यहाँ पर भी थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो फिर नतीजा भी बदल सकता है मैच का। ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका में इस समय राजू पाटिल, मैन फ्रॉम गोवे। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। फिर से हुक करने का प्रयास, इस बार टॉप एज लगा है, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। लगा ही नहीं कि पूरी तरह से टाइम किया है। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ऐसे लगा कि शायद टॉप एज लगा है। क्या थोड़ा सा मिस हिट था, लेकिन उस दिशा में थोड़ी हवाएं भी बह रही है, उसका भी फायदा मिला है प्रणय पाटिल को। और प्रणय पाटिल के तीखे तेवर शुरुआत से ही नजर आ रहे हैं। अजयकर बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये बघितलेलं आहे, प्रणय याला जर सूर गवसला तर एक मोठी धावसंख्या रचण्यामध्ये साई स्पोर्ट खारबाव या संघाला यश येते. जी हाँ, और कहीं ना कहीं जीत का सूत्र भी है। प्रणय पाटिल यदि 4 ओवर के मैच में 25-30 रन बनाते हैं तो ज़्यादातर मुकाबले खारबाव टीम जीत जाती है। फ्लाइंग स्टार्ट देते हुए अपनी टीम को अब एंगल चेंज किया है गेंदबाज दीनानाथ ने, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बल्लेबाज से दूर रखा, अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक बदला है, गेंद को दिशा दिखाई कवर पॉइंट पर, और एक तेज सिंगल। तालमेल बहुत अच्छा है दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में। पहली गेंद पर भी सिंगल चुराया था उन्होंने, और इस बार भी उतना आसान नहीं था 1 रन लेना, लेकिन बढ़िया तालमेल है। आंखों ही आंखों में इशारा किया और देखते ही देखते 1 रन पूरा कर लिया। अगदी बरोबर आहे, दोघांमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे ताळमेळ बघायला मिळते. यस नो वेटचं मिश्रण बघायला मिळते. इस बार सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा ऊपर खेल बैठे हैं। ओ, कैच का मौका था, कैच नहीं कर पाए मिड ऑफ के खिलाड़ी। दिनेश पाटिल के हाथों से ये कैच छूटता हुआ, और ये भारी पड़ सकता है। करण एक हार्ड हिटर के रूप में माने जाते हैं, लंबे लंबे प्रहार कर सकते हैं, धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा दूर से खेले थे, शायद यही वजह रही कि ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। सिर आसमान में चला गया स्ट्रोक खेलते वक्त, और वही वजह रही कि गेंद बहुत ऊपर चली गई। प्रयास अच्छा था, लेकिन कैच नहीं कर पाए दिनेश।
नाही ॲब्सोल्युटली दिनेश पाटील यांनी 30 सर्कलच्या बाहेर येऊन झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता. जवळपास चेंडूपर्यंत पोहोचला सुद्धा होता. पहले ओवर की आखिरी गेंद इस बार इनसाइड एज, किस्मत वाले हैं बल्लेबाज की गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी, गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग पर। आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के साई स्पोर्ट्स खारबाव टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वीर तानाजी दापोडी टीम के विरुद्ध साई स्पोर्ट्स खारबाव। अजय पहिल्या षटकामध्ये जर सुरुवात आपण बघितली एक चांगल्या प्रकारची सुरुवात म्हणता येईल, कारण कुठलाही फलंदाज बाद झालेले नाहीये आणि धावसंख्या जे 15 आणि विशेष म्हणजे संघाचा प्रमुख जो फलंदाज आहे प्रणय चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतो. एक चौकार मारलेले एक षटकार मारलेले आहेत. दोघी फलंदाज चांगली फलंदाजी करतायत. 15 धावा झालेल्या आहेत आणि प्रोजेक्टेड स्कोर आमचे एक्सपर्ट स्कोरर या ठिकाणी माहिती देतात की याप्रमाणे धावसंख्या जमवली तर 60 धावा होऊ शकतात. और दिन की रोशनी में खेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं 50 रन तो कम से कम बनाना ही चाहेंगे बल्लेबाज। 4 ओवर में 50 रन क्वार्टर फाइनल मैच है, बड़ा मुकाबला है और बड़े मैच की एक खासियत रहती है कि यदि आप पहले बैटिंग करते हुए अच्छे खासे स्कोर बना देते हो तो ज़रूर विपक्षी टीम पर दबाव आता है, चाहे फिर विपक्षी टीम के पास कितनी भी मजबूत बल्लेबाजी क्यों ना हो। ॲब्सोल्युटली, कारण 50 पेक्षा जास्त धावा जमवल्या तर आस्किंग 100 जेव्हा तुमचा 13 पेक्षा जास्त जाईल तेव्हा समोरच्या संघावर धावा चेस करताना धावांचा पाठलाग करताना थोडंसं प्रेशर नेहमीच निर्माण होत असतं. यापूर्वीचा सामना आपण सुद्धा बघितला होता. थोडासा सुरुवात 3 षटकापर्यंत जवळपास असं वाटलं होतं की रईस बिल्डर संघ विजयाकडे वाटचाल करतोय, पण मात्र चौथ्या षटकामध्ये यासिर शेख यांनी जी गोलंदाजी केली आणि सामन्याला कलाटणी दिली. जी हाँ, ऐसे कई मैचेस हमने देखे हैं इस सीज़न में, खासतौर पर पूरे भिवंडी तालुका क्रिकेट में। और कल रात की यदि मैं बात करूं तो जो मुकाबला ग्रामीण का हुआ था कालेर और सोनाली बी के बीच में, उसमें 13 गेंदों पर 13 रन कालेर टीम नहीं बना पाई थी। नंदन पाटिल के आउट हुए, उसके बाद पारी बिखर सी गई थी, बल्लेबाज दबाव में नजर आए और खेल पूरी तरह से पलट गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एक तरफा मैच जीतने वाली है कालेर टीम, लेकिन क्रिकेट बड़ा ही महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए हाईवे एंड से हर्षित। दापोडी टीम की तरफ यदि हम देखते हैं तो उनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर्स है, जिसमें 3 उनके प्रमुख ऑलराउंडर माने जाते हैं, राजन पाटिल, हर्षित चौधरी और प्रीतिश पाटिल। बल्लेबाजी में उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त सलामी बल्लेबाज है हर्षित और दिनेश पाटिल के रूप में, जो एक प्रसिद्ध सलामी जोड़ी मानी जा सकती है। नाही, ॲब्सोल्युटली अजय गरज सांगितलेलं आहे तालुका क्रिकेट तालुका क्रिकेटमधली सर्वोत्कृष्ट जोडी वीर तानाजी दापोडी संघाकडे आहे, परंतु योग्य वेळी त्यांनी चांगल्या प्रकारे प्रदर्शन करणं गरजेचं आहे. जी बिल्कुल, क्रिकेट खेल की यही तो खासियत है, आपके पास क्या है उससे बेहतर ये होता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। समय का ख्याल रखना है प्लीज़ दापोडी टीम के कैप्टन। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद गेंद के नीचे। ओ, ये क्या कर दिया, ये तो बहाना ही कहा जा सकता है गवली सर। इतना बड़ा मुकाबला आप खेल रहे हो, आपने कैप भी पहना हुआ है, क्या गॉगल आप नहीं पहन सकते थे? सूरज की किरणें उनकी आंखों पर आ गई। इस तरह के बहाने चलने वाले नहीं है इतने बड़े मैच में। 2 रन लेने का मौका था करण के पास, करण काफ़ी लकी आज नज़र आ रहे हैं, कैच भी ड्रॉप हुआ है और ये भी एक आसान सा मौका था। येस, सोपा झेल होता, पण बऱ्याचशा वेळा असं पाहतोय की आपण सीमारेषेवर तुम्ही जेव्हा क्षेत्ररक्षण करता गॉगलचा वापर करायला हवा, अन्यथा सूर्यकिरणामुळे थोडासा बऱ्याचशा वेळा झेल घेण्याची समस्या निर्माण होत असते. छोटी छोटी बातें होती है क्रिकेट के खेल में, लेकिन उनका बड़ा महत्व होता है। एक इस समय शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट एक मिड ऑफ रखा गया है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर से कैच का मौका, इस बार कोई गलती नहीं, आसान सा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक और विकेट का पतन होता हुआ। आखिरकार किस्मत भी कितना साथ देती करण का, हर गेंद को वो हवा में उछाल रहे थे और इतना ज़्यादा जब आक्रामक आप खेलते हो तो ज़रूर आपके विकेट गिरने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहा था लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी और अंतर गेंद पार नहीं कर पाई। पहले विकेट का पतन होता हुआ 17 पर गिरा ही ये पहला विकेट साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम का। करण ने आउट होने से पहले मात्र 6 रनों का योगदान दिया। ठीक तरह से अपने स्ट्रोक्स को वो टाइम नहीं कर रहे थे, थोड़ा दूर से खेल रहे थे, गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उनके स्ट्रोक्स ज़्यादातर हवा में चले गए। आज वीर तानाजी दापोडे संघाचा विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाज सुहास पाटील क्षेत्ररक्षण करताना दिसत नाही मला वाटते. शुरुआत अच्छी मिली है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को, खासतौर पर प्रणय पाटिल बहुत अच्छे टच में नजर आते हुए 3 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 1 सिक्सर की मदद से 11 पर बैटिंग करते हुए नए बैट्समैन अक्षय आए हैं और अक्षय भी
मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। दोनों भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी युवा है, लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं है। ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन इस खेल का अच्छा खासा अनुभव है। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। फील्डर है वहां पर, 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज, लेकिन फील्डिंग बढ़िया। केवल और केवल एक ही रन पर सीमित रखा गया है बल्लेबाजों को। स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। बहुत बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला ग्रामीण क्रिकेट से। आप देख रहे हैं इस समय आरएस कप 2021, आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा की ये पेशकश। सुभाष ठाकरे, हरीश ठाकरे, राहुल और उनके तमाम साथियों द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन इस टूर्नामेंट का। मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और काम तमाम होता हुआ बल्लेबाज का। एक और विकेट का पतन। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हर्षित चौधरी 2 विकेट्स चटका चुके हैं इस ओवर में। आवश्यकता पण तो फटका मारलेला आहे. स्विचिटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि डीप कव्हरला एक चांगला झेल घेतला जातोय आणि चांगली गोलंदाजी षटकामध्ये बघायला मिळते हर्षद त्याची. कहीं ना कहीं हवाओं का जो रुख है वो दिलचस्प है और उसके चलते ये स्विच हिट खेला गया था। दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए ऑन साइड से ऑफ साइड में ज़्यादा तेज़ हवाएं बह रही है और यही वजह रही कि अक्षय ने पहली ही गेंद पर स्विच हिट लगाने का प्रयास किया, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका बराबर नहीं था। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे और कैच के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए खाता भी नहीं खोल पाए अक्षय। नए बैट्समैन नंबर 4 पर क्रीज पर पहुंचते हुए सूरज। ग्रामीण पूलमधला दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना भव्य 11 वाघविल आणि जॉली कामतगर दोन्ही संघ कर्णधार आणि टॉससाठी तयार राहायचं आहे. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आणि भव्य 11 वाघविल भिवंडी विरुद्ध ठाणे असा सामना म्हटलं तर वावगा ठरणार नाही. दोन्ही कॅप्टननी टॉससाठी तयार राहायचं आहे. जी हाँ, भिवंडी ग्रामीण के बाहर की भी ग्रामीण की टीमें खेली है इस टूर्नामेंट में, जिसमें कामोटी टीम को भी हमने एक्शन में देखा, जिन्होंने गोरसई बी टीम को पहले राउंड में हराया। उसके बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम ने कामोटी टीम को परास्त किया। लेकिन वाघबिल एक ऐसी टीम है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 2 मैच जीते हैं और क्वार्टर फाइनल मैच में अगले मैच में खेलती हुई नजर आएंगी। बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड, एक और बड़ा झटका लगता हुआ साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को। प्रणय अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनका भी काम तमाम कर दिया है हर्षद ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। प्रतिनिधी चेंडू पाहूया आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न आणि उजवी एसटी वाकवलेले काय चेंडू हाताळले दुसऱ्या अँगलमध्ये सुद्धा आपण पाहू शकता. आणि खरं तर ज्या विकेटची आवश्यकता होती अजय, ती विकेट मात्र हर्षदाने प्राप्त करून दिलेली आहे. देखिए, हल्का सा इनसाइड आउट खेलना चाहते थे वो, हालांकि पैरों में कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी, थोड़ा सा पीछे हटे और फिर बैट का फेस खोला उन्होंने और उसमें ही फंस गए। बैट यदि सीधा रहता तो शायद गेंद बल्ले पर ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैट का फेस ज़्यादा खोल दिया था और बीट हुए, सीधे गेंद जाकर लगी डंडे पर। बहुत बड़ा झटका लग चुका है। 3 विकेट्स एक ही ओवर में, गजब की गेंदबाजी हर्षद चौधरी द्वारा। केवल 3 रन खर्च किए हैं। दूसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। स्कोर 18 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। साई स्पोर्ट्स खारबाव अच्छी शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ाती हुई। पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन इस दूसरे ओवर में खेल काफ़ी पलट गया है। हे पण अजय, हर्षद जो होता या हंगामात थोडासा कुठेतरी संघर्ष करीत होता, पण या स्पर्धेमध्ये मात्र अतिशय चांगली कामगिरी करताना आपण पाहतोय. पण आपण नेहमी म्हणतो की फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट असं जे म्हटलं जात आहे ते या ठिकाणी बघायला मिळते हर्षद चौधरी द्वारा. नए बैट्समैन वेदांत आए हैं, इनका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि कल का जो आखिरी मैच था उसमें बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। 4 छक्के जड़े थे उन्होंने। बहुत देर रात वो मुकाबला खेला गया था, 3 बजे के आसपास। लेकिन इस समय दबाव भी रहेगा, क्योंकि 3 विकेट्स एक ही ओवर में गंवा दिए हैं खारबाव टीम ने। हर्षद अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। पैरों पर गेंद फ्लिक कर दिया है, थोड़ी देर हवा में रही, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। 1 रन पूरा किया है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डिंग बढ़िया। तो इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ हर्षद चौधरी का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 19 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। साई स्पोर्ट्स खारबाव। येस, 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या झालेले 19. 4 षटकांचा सामना आहे. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. काल आपण बघितलं पहिला फलंदाज करण बाद झाला होता, त्यानंतर बाद झाला होता तो अक्षय, त्यानंतर बाद झाला होता प्रणय. 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. आपण जो सामना पाहतोय ग्रामीण पूलमधला पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना पाहतोय साई स्पोर्ट खारबाव विरुद्ध वीर तानाजी दापोडे.
2 ओवर का खेल बचा हुआ है। इस समय ड्रिंक्स का समय है, ड्रिंक्स मैदान में है। थोड़ा सा रणनीति के बारे में खासतौर पर बल्लेबाजों को सोचना होगा। एक प्लानिंग के तहत यहाँ से बैटिंग करनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि विकेटों का जो पतझड़ है वो कहीं ना कहीं सिरदर्द बन रहा है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के लिए। दमदार शुरुआत रही थी, पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग देखने को मिली थी, 15 रन आए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, विकेटों की झड़ी सी लग गई है। तो ये विकेटों का पतझड़ रोकना होगा आने वाले 2 ओवर्स में, और साथ में रनों की रफ्तार को भी बढ़ाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को। कम से कम यहाँ से 20-25 रन जोड़ने का शायद प्रयास हो सकता है। पहले जो हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्टेड स्कोर 1 ओवर के बाद 60 रन, वो तो अब मुझे बहुत दूर नज़र आ रहा है। यहाँ से 50 तक पहुँचने के लिए भी बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। ॲब्सोल्युटली अजय, आपण पाहतोय की जर मोठी धावसंख्या उभी करायची असेल तर एक पार्टनरशिप बिल्डअप होणं गरजेचं आहे, एक भागीदारी होणं गरजेचं आहे. सूरज और वेदांत की जोड़ी क्रीज पर है। सूरज जो सिटी क्रिकेट में सुरेश एंटरप्राइजेस पाये टीम की कप्तानी करते हैं, अच्छे बैट्समैन है। आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणीतरी खेळपट्टीवर टिकून राहणं गरजेचं आहे. वन हॅज टू प्ले अँकर रोल. कोणीतरी थांबून राहणं गरजेचं आहे. एक वेगवान पार्टनरशिप करणं गरजेचं आहे, तरच 50चा आकडा पार होऊ शकतो. पण क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्त्व नसतं. जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको कितने बड़े शॉट्स खेलने हैं, कौन सी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना है। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का यदि प्रयास होता है तो शायद और विकेट्स गिर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अभी आपके जब विकेट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं तो आप हर गेंद पर रिस्क उठा सकते हो, लेकिन यहाँ से हर गेंद पर क्या बल्लेबाज रिस्क उठा पाएंगे, देखने वाली बात है। नया ओवर लेकर प्रीतेश पाटिल वीआईपी एंड से अपना ओवर शुरू करते हुए प्रीतेश। बढ़िया गेंद थी, इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन जितनी शॉर्ट पिच गेंद समझ रहे थे बल्लेबाज उतनी शॉर्ट पिच थी नहीं। ये गुड लेन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ लहराती हुई चली गई थी विकेट कीपर के पास। नाही, अतिशय चांगला चेंडू म्हणता येईल, कारण जितका शॉट समजला होता तेवढा चेंडू शॉट नव्हता हा, मात्र वेगात गेला होता आणि पडल्यानंतर थोडा बाउन्सही झाला होता. हालांकि इस एंड से गेंदबाजी करना इस समय बहुत खतरनाक काम है गेंदबाजों के लिए। टॉप एज गेंद हवा में, शॉर्ट फाइन लेग पर कैरी नहीं हुई, लेकिन बढ़िया एफर्ट, बहुत अच्छी तरह से गेंद को रोका गया है। एक ही रन। देखिए हवा के विरुद्ध आपको गेंदबाजी करनी पड़ रही है। हालांकि मोमेंट आपको मिल सकता है, अंदर की तरफ गेंद आ भी रही है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, क्योंकि हवा जो है वो ऑफ साइड से ऑन साइड में बह रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए। लेकिन यदि ऑन साइड में खेलने का मौका मिलता है, थोड़ा सा मिस टाइम भी होता है स्ट्रोक, तो मुझे लगता है कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। एक तो ताकतवर खिलाड़ी है खासतौर पर सूरज। बहुत अच्छी गेंद, इस बार फिर से इनसाइड एज लगा है। कमाल की गेंदबाजी। इन परिस्थितियों में से गेंदबाजी करना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन प्रीतेश अपने आप को बैक कर रहे हैं और जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जो लाइन ऑफ अटैक है वो बहुत बढ़िया है। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अजय, पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात बघायला मिळाली, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकापासून थोडंसं एक धावांसाठी संघर्ष करावा लागतोय. अगली गेंद, इस बार कंधे का जोर लगाया, बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछाल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। ये देखिए अतिरिक्त उछाल था, बैट्समैन घूम गए थे, नजरें नहीं थी गेंद पर। शिवराम मोहिते आणि दिनेश नाईक. शिवराम मोहिते सिनियर पंच आहेत, स्क्वेअर लेगचे पंच दिनेश नाईक. शुरुआत में बहुत बढ़िया बैटिंग देखने को मिली, लेकिन पिछले ओवर से पूरी तरह से गेंदबाजों का राज। प्रीतेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, ऊपरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन कैच नहीं कर पाए, कैच ड्रॉप हुआ है। हालांकि रिकवरी बहुत अच्छी, दूसरा रन लेने का मौका नहीं दिया, गेंद डीप में चली गई थी। अभी ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जब हवाएं बहती रहती है, गेंद जब ऊपर चली जाती है, मिस टाइम स्ट्रोक्स जब खेले जाते हैं, तो कैच करना भी उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गेंद हवा में झूलती रहती है। आपका जो एंटीसिपेशन होता है वो कई बार गलत साबित हो जाता है। कैच को जज करना सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन हाथों में जब गेंद गिर जाती है तो कैच करना चाहिए। इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक ऑन ड्राइव कर दिया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया और 1 से ही संतुष्ट। सिंगल डबल से कोई ज़्यादा परेशानी है ही नहीं इस समय दापोडी टीम के कैप्टन को। बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति होती हुई सिर्फ 4 रन खर्च किए प्रीतेश पाटिल ने। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर साई स्पोर्ट्स खारबाव। क्रिकेटला म्हणूनच आपण अनिश्चिततेचा खेळ संबोधला होता. पहिलं षटक जेव्हा संपलं तेव्हा प्रोजेक्टेड स्कोर आपण 60 मानला होता, पण आता असं वाटतंय की 40+
कडे लक्ष असणार आहे आणि मला असं वाटतं 40चा आकडा जर पार केला तर कुठली तरी संधी मिळणार आहे. साईस्पोर्ट खारबाव संघाच्या गोलंदाजांना संधी असू शकते, पण मात्र धावसंख्या 35च्या आतमध्ये राहिली तर मात्र क्षेत्ररक्षण करताना आणि गोलंदाजी करताना साईस्पोर्ट खारबाव संघाच्या गोलंदाजांना क्षेत्ररक्षणावर जबरदस्त मानसिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. 3 विकेट्स गंवा दिया अभी तक के खेल में. पहला विकेट गिरा था अक्षय के रूप में, बल्कि करण के रूप में 6 रन बनाकर आउट हुए थे. 15 पर पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट 17 पर गिरा, तीसरा विकेट 18 पर. तो जैसे ही पहला विकेट गिरा है तब से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ढील नहीं दी जा रही है बल्लेबाजों को गेंदबाजों द्वारा. बहुत ही सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी. पिछले 2 ओवर्स में केवल 8 रन बल्लेबाज बना पाए हैं. आखिरी ओवर लेकर अनुभवी गेंदबाज और अनुभवी ऑलराउंडर राजन पाटिल तैयार होते हुए हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे. कुछ बड़े शॉट्स की आवश्यकता है इस समय. ये फॉल ऑफ विकेट्स आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया टेलीकास्ट. नेवर की पहली गेंद का सामना करेंगे सूरज पाटिल. शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, हवा के विरुद्ध खेला हुआ स्ट्रोक और फील्डर के हाथों में. कोई गलती नहीं, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर विकेट का पतन होता हुआ. यही फर्क होता है डॉक्टर गवली सर, जब आप हवा के साथ खेलते हो तो आपके मिस टाइम शॉट्स भी मैदान के बाहर जाते हैं, लेकिन जब आप इन टू द विंड खेलते हो, हवा के विरुद्ध खेलते हो, तो फिर बाउंड्री को पार करना बहुत ही मुश्किल. जोरदार हवाएं बहती हुई इस समय सोनाली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से, और इन बहती हुई हवाओं का फायदा इस समय मिला है गेंदबाज राजन पाटिल को. चौथे विकेट का पतन निराश किया सूरज पाटिल ने. मात्र 2 रन बना पाए अपनी टीम के लिए. केवल प्रणय पाटिल ने अच्छे शॉट्स लगाए, उनके अलावा हम देखिए तो कोई भी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया है. शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, ताकत भी झोंकी थी उन्होंने, लेकिन हवा के विरुद्ध बहुत तेज हवाएं बह रही है, जिस वजह से गेंद मैदान के बाहर नहीं मार पाए. अगदी बरोबर, कारण आपण पाहतो या बाजूने जेव्हा आपण पाहतो या बाजूने जेव्हा फलंदाजी होते तर ते एक मोठा फटका खेळायचा असेल तर पूर्णपणे ताकद झोकून द्यावी लागते. यावेळेला बघितलं आपण मिड विकेट क्लिअर करण्याचा जो प्रयत्न केला होता त्यामध्ये यश आलेलं नाही आहे. वडगर आणि सोनाळे दोन्ही संघाने सुद्धा संपर्क साधायचा आहे. वडगर आणि सोनाळे त्याचबरोबर जे हनुमान सरवडे आणि कारिवली दोन्ही संघ कर्णधारांनी सुद्धा संपर्क साधायचा आहे. अभी देखना है कि इस आखिरी ओवर में बल्लेबाज कितने स्ट्रोक्स ऑन साइड में खेलते हैं और कितने ऑफ साइड में खेलते हैं. ऐसी स्थिति में गैप में खेलना बहुत ज़रूरी. नए बैट्समैन आए हैं मोनिश. आगे रखी हुई गेंद, जोरदार अपील हो रही है. बैट्समैन को ज़रूर छकाया था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज बल्लेबाज और अंपायर के बीच में आ गए थे, यही बताते हुए दिनेश नाइक, जिस वजह से ये जो फैसला है उन्होंने बैट्समैन के पक्ष में सुनाया है. राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. राजन पाटिल की ये आदत भी है, वो राउंड द विकेट ज़्यादा गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन गेंद डालने के बाद कहीं ना कहीं वो डेंजर एरिया में आ गए थे, और मैं समझता हूं कि बाल बाल बच गए मोनिश. इस बार स्विंग एंड मिस, एक और बढ़िया गेंद. लग ही नहीं रहा है कि खारबाव के बल्लेबाज अब बैटिंग कर रहे हैं. पहले ओवर में केवल उनका दबदबा था, लेकिन उसके बाद लाजवाब बॉलिंग. केवल अब 3 गेंदें पारी में शेष. स्कोर रुका हुआ है 24. इस बार तेज करने की कोशिश, और क्या ये ट्राउजर को छूकर चली गई है. डॉट गेंद, जी हाँ. अब ये एक ऐसी गेंद थी डॉक्टर गवली सर जिस पर रन्स बनाए जा सकते थे. थोड़ा सा भी बल्ला लगाते, फाइन लेग ऊपर है, उसके बगल में से निकाल सकते थे, चौका प्राप्त कर सकते थे बैट्समैन वेदांत, लेकिन मौका गवा दिया. ॲब्सोल्युटली फाईन ग्लान्स तुम्ही करू शकत होता. तुम्ही फ्लिकचा फटका चेंडूवर खेळू शकत होता, तोही खेळता आलेला नाही. फक्त मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. केवल हवाई स्ट्रोक्स अब देखने को मिल रहे हैं. इस बार बल्ले पर लिया जरूर है, लेकिन हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और बहुत ही अच्छा कैच, शानदार कैच. एक और विकेट का पतन होता हुआ. विकेटों की झड़ी सी लग गई है. विकेटों का जो पतझड़ दूसरे ओवर में शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है. आड़े बैट से सामने प्रहार करने की कोशिश, और फिर से वही बात, एक तो स्ट्रोक भी मिस टाइम था और हवा के विरुद्ध भी शॉट खेला गया था. तो विकेट गिरा है. कुल मिलाकर 5वां. स्कोर हुआ है 24 रन.
24 धावा झाल्या आहेत आणि खास करून साईस्कोर कारभार संघाचे फलंदाज आहेत ते मात्र हवेत फटके खेळताना आपण पाहतोय. खरं तर करण याला 2 जीवनदानं मिळाली, त्याचा फायदा त्याने उचललेला नाही. एक मात्र सुरुवात चांगली केली होती ती म्हणजे प्रणय याने, पण प्रणयसुद्धा फार वेळ खेळपट्टीवर थांबू शकलेला नाही आहे आणि त्यानंतर मात्र फक्त आणि फक्त हजेरी लावण्याचं काम या ठिकाणी फलंदाजाने केलेलं नाही. आपण जर बघितलं वेदांत त्याची फलंदाजी जर बघितली तर तब्बल वेदांत त्याने 8 चेंडू खेळले आहेत आणि धावा जमवल्या 3. जेव्हा तुम्ही 8 चेंडू खेळून धावा 3 जमवतात तेव्हा नक्कीच आपल्या संघावर प्रेशर क्रिएट करतात. जी हाँ, वो भी 4-4 ओवर के मैच में, तो ये ब्लैक इनिंग उनकी कही जा सकती है। वो याद नहीं रखना चाहेंगे कभी भी इस इनिंग्स को। इस बार तगड़ा प्रहार किया है, ताकतवर शॉट, बाहुबली के बैट से बाहुबली स्ट्रोक, 6 रन। तगड़े बल्लेबाज है मोनिश, अंतिम गेंद थी पारी की और क्या करारा प्रहार किया है उन्होंने, अपने ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और गेंद का बुरा हाल कर दिया। अंतिम गेंद पर यह छक्का आया है और ये 6 रन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पारी समाप्त होती हुई खारबाव टीम की इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुल रन संख्या 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वीर तानाजी दापोडी टीम के सामने 31 रनों की चुनौती। यस, सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी, उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता आहे. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचंय सायस्पोर्ट कारभार संघाने. ये देखिए किस तरह से अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा था, डिप मिड विकेट के ऊपर से तान दिया था गेंद को। राजन का ओवर बहुत अच्छा घट रहा था, लेकिन आखिरी गेंद थोड़ी सी ढीली रही और उसका पूरा फायदा उठाया मोनिश ने। और कई बार हम देख चुके हैं ग्रामीण क्रिकेट में खास तौर पर, या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट में कहा जा सकता है, जब 4-4 5-5 ओवर के मैचेस होते हैं, आखिरी गेंद पर पारी में जब छक्का लगता है तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस भी पैदा कर देता है दोनों टीमों के बीच में। लेकिन दापोडी टीम के मुझे लगता है कि खिलाड़ी ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। 4 ओवर में 31 रन, वैसे देखा जाए तो उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी कहा जा सकता है इस समय, लेकिन खेल है क्रिकेट का, 4 ओवर्स का खेल होना बाकी है। रिक्वायर्ड रेट Yes, रहेगा इस पारी की शुरुआत से 7.75 रन प्रति ओवर। जी गवळी सर। येस, मान्यवर कक्षामध्ये आत्ताच आगमन झालेले हरिभक्त पारायण भगवानजी पाटील यांचं आगमन झालेलं, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आर एस ग्रुप ठाकूरपाडा यांच्या वतीने आर एस ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाचे आगमन झालेलं, आज त्यांचा उत्साह जास्त असेल कारण धर्मराज चषक 2021 मध्ये या संघाने सेमीमध्ये प्रवेश केलेला आहे, तेव्हा नक्कीच उत्साह असणार आहे. अरविंद आवी, उत्साह असणार आहे, मनोधैर्य वाढलेला असणार आहे. जी हाँ, मनोबल ऊंचा हो जाता है जब आप जीतते जाते हो। जीत से बड़ा कोई टॉनिक नहीं हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। तो 4 ओवर में 31 का टारगेट है, किस तरह से ये टारगेट चेज किया जाएगा या फिर चेज होगा या नहीं, आइए सुनते हैं आगे की कहानी डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर की जुबानी। धन्यवाद अजय घरत. 31 धावांचं लक्ष्य, एक माफक लक्ष्य आहे. लो स्कोरिंग सामना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, परंतु अजय आपण पाहतो की कित्येक वेळा आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा आपण बघितलेले लो स्कोरिंग सामने सुद्धा इंटरेस्टिंग होत असतात, पण त्यासाठी तुम्ही चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे, क्षेत्ररक्षण करणंही गरजेचं आहे. सलामी जोडी पाठवायची आहे, सलामी जोडी पाठवायची त्वरित, कारण वेळेसंदर्भात आम्हाला सहकार्याचे, कारण आज अंतिम दिवस आहे. अंतिम सामना सुद्धा होणार आहे. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाचे संकटमोचक अमोल पाटील, आणि काल दाखवून दिले त्यांनी एक संकटमोचक आहे संघाचा. वेलकम, स्वागत आहे. देखिए आजकल क्रिकेट काफ़ी हो रहा है और खिलाड़ियों को काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता है। कई टीमें एक दिन में 2-2 3-3 जगह पर क्रिकेट खेलती है, तो उतना आसान नहीं होता है मैनेज करना। प्लीज़ बल्लेबाजों को
दुपारी सामना झाला होता आणि 183 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिज संघ गडगडला होता. ऋषभ षटकातील पहिला चेंडू घेऊन पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे आणि पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळते. अजय गरत. इसीलिए तो क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है. मैंने अभी अभी कहा कि वो समय लेना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की. पहली गेंद पर बहुत बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, बिल्कुल भी नियंत्रण में नजर नहीं आए और पहली गेंद पर शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए दिनेश पाटिल. आणि पहिल्या चेंडूवर तुम्हाला जेव्हा सफलता मिळते तेव्हा गोलंदाजाचं मनोधैर्य जे असतं ते जबरदस्त वाढत असतं, आत्मविश्वास दुणावत असतो आणि संघामध्ये सुद्धा उत्साह निर्माण होत असतो. पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळालेली आहे आणि आता मात्र खेळण्यासाठी नेहमीच मी उल्लेख करीत असतो, जॉली स्पोर्ट कामतगर संघ जेव्हा खेळतो तेव्हा अमोल पाटीलला मी संकटमोचक म्हणतोय आणि जेव्हा वी तानाजी दापोडे हा संघ खेळत असतो तेव्हा राजनला मी संकटमोचक समजत असतो. संकटमोचक काय करते बघायचं आहे, कारण जॉली स्पोर्ट कामतगर संघ सुद्धा यानंतर सज्ज होणार आहे. राजन जातोय, सर्व संघाचा सर्वात सिनियर खेळाडू आहे. लो स्कोरिंग सामना आहे कारण दिनेश पहिल्या चेंडूवर बाद झालेला आहे. एकतीस धावांचं लक्ष आहे मित्रांनो. आपण हा पहिला ग्रामीण पूल मधला पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय. ऋषभ पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर VIP कक्षाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ होतोय. लॉंग रनअप आहे. क्षेत्ररक्षण जर बघितलं, बाहुबली मोनिश एसटीच्या पाठीमागे थोडासा दूर. हा चेंडू मात्र पोलचा फटका, चेंडू हवेत आहे मात्र सीमारेषा क्लिअर करते काऊ कॉर्नरच्या वरून. षटकार. कुठल्याही प्रकारे मानसिक दबाव नाही. आपला नैसर्गिक खेळ करताना पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. अराउंड दी ऑफ स्टंप खेचून मारला होता आणि चेंडू काऊ कॉर्नरच्या वरून जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. ऋषभ राईट आर्म, यावेळेला चेंडू मात्र उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर आहे, खाली राहतोय. जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ वेध घेत येतो एसटी रक्षकाचा. कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये. 1-6. 31 धावांचं लक्ष आहे सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. पहिलं षटक हे मार्गस्थ आहे. ऋषभ यावेळेला मात्र पुन्हा एक चांगला चेंडू आहे. षटकार लागल्यानंतर कमबॅक करतोय ऋषभ. पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळवते, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर मात्र एक चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते ऋषभ द्वारा. संघाचा प्रमुख गोलंदाज आहे, फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे. धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे 6. 1-6. दिनेश पाटील शून्यावर बाद झाला होता, त्यानंतर राजन यांनी एक षटकार मारला होता. हा चेंडू मात्र स्वैर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे आणि पंच शिवराम वैती इशारा करतायत वाईट बॉल. तुमच्याकडे जेव्हा धावा कमी असतात, तुमच्याकडे जेव्हा भांडवल कमी असतं, तेव्हा अशा प्रकारची जी गोलंदाजी असते ना, ती थोडंसं संघावर प्रेशर क्रिएट करत असते. अचूक टेपावर गोलंदाजी करणं फार गरजेचं असतं. याला मात्र काय फटका खेळलेला आहे, क्लास फटका बघायला मिळतोय आणि चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. छक्का लगने के बाद कुछ अच्छी गेंदें देखने को मिली थी, लेकिन ये कमज़ोर गेंद थी. शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड, बैकफुट पर जाकर बिल्कुल गैप में निकाल दिया था, पॉइंट और कवर के दरमियान से. बहुत ही सुंदर स्ट्रोक. आउटफील्ड बहुत ही तेज़ है यहाँ पर सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर. राजन बढ़िया बैटिंग करते हुए. या पुन्हा फटका खेळलाय, चेंडू हवेत आहे मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नाही. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे जातोय आणि सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. आता मात्र नक्कीच वीताने दापोडे हा संघ वरचढ होताना दिसतोय, कारण चौकाने धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झाली 15, म्हणजे निम्मा पल्ला पार केलेला आहे. 31 धावांची आवश्यकता आहे. यानंतर भव्या 11 वाघबील आणि जॉली कामतगर दोन्ही संघ कर्णधारांनी टॉससाठी तयार राहायचं आहे. ग्रामीण पूलमधला हा दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना असणार आहे. जॉली स्पोर्ट कामतगर आणि भव्या 11 वाघबील.
बव्या 11 वाघबील आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर दोन्ही कॅप्टनने तयार आहे. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. बव्या 11 वाघबील संघ कर्णधाराने त्वरित संपर्क साधायचा आहे. आता मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय सूरज. 15 धावा पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या आहेत आणि जेव्हा साई स्पोर्ट खारबाव संघ हा फलंदाजी करत असताना सुद्धा 15 धावा आल्या होत्या. पहिल्या षटकाचा विचार जर आपण अजय करत केला तर पहिल्या षटकामध्ये खारबाव संघाची सुरुवात चांगली होती. कुठलाही फलंदाजी बाद झालेला नव्हता. 15 धावा होत्या. पण या ठिकाणी फलंदाज आपण पाहतो एक बाद 15. पण त्यानंतर मात्र जी गोलंदाजी झाली होती अप्रतिम गोलंदाजी झाली होती. और अब वही तो फर्क है पहले बैटिंग करने में और बाद में बैटिंग करने में. अब लक्ष्य सामने है. आपको पता है कि 3 ओवर्स में आपको केवल 16 रन बनाने हैं. हा चेंडू फुलटा चेंडू काय फटका खेळलेला आहे. चेंडू जातोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हा सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा काय इशारा आहे ते बघायचा आहे. 4 या 6. पंच दिनेश नाईक त्या ठिकाणी षटकार कॅल्क्युलेटेड सिक्सर तोलून आपण मारलेला षटकार. षटकाने धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झाले 21. आता जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 10 धावांची आवश्यकता आहे. सूरज यावेळेला मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडा अनपेक्षित बाउन्स झाला आणि टर्नही झाला. हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र शरीरापासून जवळ असलेल्या चेंडूला तुम्ही चांगल्या प्रकारे हुकचा फटका खेळू शकत नाहीये. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये. याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे. ढकललेला आहे चेंडूला शॉर्ट कव्हरला आणि त्यावर एक धाव घेतलेली आहे. खारबावचे समर्थक थोडेसे नाराज आहेत. मोठ्या संख्येने खरं तर सामना पाहण्यासाठी आलेले होते. निराश पावलाने परतताना दिसतात काही समर्थक खारबाव गावचे. यावेळेला मात्र फटका खेळला चेंडू जातोय तो स्क्वेअर लेगकडे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. फक्त एकच धाव मिळेल आणि एका धाव्याने वीर तानाजी दापोडी संघाची धावसंख्या झालेली आहे 23. हा क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय. उपांत्यपूर्व फेरीतला सामना साई स्पोर्ट खारबाव विरुद्ध वीर तानाजी दापोडे. याला मात्र कंट्रोल हुक शॉट खेळलेला आहे पण मात्र ताकद झोकलेली नव्हती. चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेवर आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत. 2 धावेने धावसंख्या झालेली 25. फक्त आणि फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. बव्या 11 वाघबील संघ कर्णधाराने त्वरित संपर्क साधायचा आहे. टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. सूरज याला मात्र फोर्स केलेला आहे. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्र चेंडू खाली येतोय आणि झेल सुटतोय. जीवनदान मिळतंय आणि दुसरी धाव घेण्याचा मला एकच धाव घेतलेली आहे. मला वाटते महेंद्र पाटील त्या ठिकाणी होते. झेल सोडलेला आहे. एक धावी पूर्ण झालेली. एका धावेने धावसंख्या वाढते 26. आता जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 5 धावा. चेंडू आणि 5 धावा. ड्रिंक्स इंटरवल आमचे ड्रिंक्स घेऊन ॲक्टिवा मैदानात जाते. या ठिकाणी बरेचशा वेळा होते ड्रिंक्स ट्रॉली पाहतोय पण यावेळेला मात्र आमची ॲक्टिवा मैदानात जाते. चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. आज पुन्हा एकदा राजन पाटील यांनी संकट मोचकाची भूमिका अदा केलेली आहे कारण पहिल्या चेंडूवर दिनेश बाद झाला होता आणि राजन पाटीलला बढती दिली होती. खरं तर बऱ्याचशा वेळेला आपण पाहतोय की प्रितेश येतोय. राजन साधारण 4थ्या किंवा 5व्या क्रमांकावर खेळतोय पण 1 डाऊनला जो निर्णय घेतला होता तो योग्य ठरला. टर्निंग पॉईंट ठरला म्हणता येईल. येस डेफिनेटली टर्निंग पॉईंट आपण म्हटलं तर हर्षदचं षटक जे होतं ते फार महत्त्वाचं ठरलं होतं कारण साई स्पोर्ट खारबाव संघाची सुरुवात चांगली होती. 15 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर हर्षद याने जे दुसरं षटक हाताळलं होतं त्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा देऊन 4 धावा दिल्या आणि 3 फलंदाज बाद केले. तर ते टर्निंग पॉईंट आणि हर्षद फलंदाजी सुद्धा चांगली करतोय कारण सलामीला आलेला आहे. दिनेश लवकर बाद झाला. पहिल्या चेंडूवर बाद झाला. त्यानंतर मात्र अँकर रोल करतोय हर्षद आणि त्याला चांगली साथ देताना राजन पाटील.
वाघवील संघाचा कॅप्टन जर आला असेल तर आपण त्वरित म्हणजे टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. येस भव्य 11 वेलकम, स्वागत आणि अभिनंदनीय आहे. कारण आतापर्यंत आपली कामगिरी चांगली झालेली आहे. तुम्ही जेव्हा क्वार्टर फायनलचा सामना खेळतात तुमची एक चांगली कामगिरी झालेली आहे. पण अजय आपण पाहतोय स्पर्धा जशी पुढे पुढे जात असते आव्हान थोडंसं कठीण होत जातं, कारण त्याचप्रमाणे ताकदीचे संघ तुमच्या समोर येत असतात. वळूया आपण खेळाकडे. 12 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता, सोपं समीकरण. बऱ्याच वेळा आम्ही म्हणतो की सोपं समीकरण क्रिकेटमध्ये कठीणही काही नसतं आणि सोपंही नसतं असं म्हणतात, पण 12 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. असाच एक सामना मी पाहत होता भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे. 12 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आणि त्या सामन्यामध्ये भारत पराभूत झाला. हेनरी ओलोंगाने हॅट्रिक केली आणि भारताचे 3 फलंदाज बाद झाले. अक्षय यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ निघून जातोय, वेध घेतोय यष्टिरक्षकाचा. 11 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. अकरा चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. यावर मात्र स्लॉग शिपचा फटका आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार आणि याचबरोबर साईस्फोल खारबाव हा संघ सुद्धा सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्यांदा नाणेफेक होईल, त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यात येईल. भाव्या 11 वाघबिल व जॉली स्पोर्ट्स कामतगर दोन्ही कॅप्टननी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, त्वरित यायचं आहे, कारण हा दुसरा ग्रामीण पूलमधला क्वार्टर फायनलचा सामना. इथे खूप खूप स्वागत आहे आणि अभिनंदन आहे. अरविंद खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन आहे. आमचे हरिभक्त पारायण भगवानजी पाटील आपण यायचं आहे, आपल्या शुभास्ते टॉस होईल. हरिभक्त पारायण हा बाप हेच आमचे राजारामजी पाटील आपण यायचं आहे. राजारामजी पाटील आमचे निवृत्त आदर्श शिक्षक निवृत्त झाले होते, आपण यायचं आहे. यस हरिभक्त पारायण भगवानजी पाटील खूप खूप स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये. येस आमचे निवृत्त आदर्श शिक्षक यांचंही स्वागत आहे. कॉईनची माहिती आहे पुन्हा शॉर्टमध्ये येतोय. एक बाजू सुभाषजी ठाकरे यांचं वैशिष्ट्य असं आहे, आमच्या स्पर्धेचे आधारस्तंभ, भिवंडी तालुका ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष, BC4चे सदस्य आणि विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाज म्हणून ख्याती आहे. दुसरी बाजू हरेशजी ठाकरे आमच्या स्पर्धेचे दुसरे आधारस्तंभ RS ग्रुपचे. दोघांपैकी एकाचं नामनिर्देशन आपण करायचं आहे. भगवानजी पाटील आपण आपल्या शुभास्ते टॉस करायचं आहे. अरविंद कॉलिंग आय थिंक 4 षटकांचा सामना असणार आहे आणि टॉस मात्र जिंकलेला आहे तो म्हणजे भव्य 11 वाघवीर संघाने. भगवानजी राजारामजी आपलं खूप खूप आभार आहे, आपण टॉससाठी आलात. पुन्हा आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. इथे 4 षटकांचा सामना आहे. नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे. पहिला प्रश्न आहे, आतापर्यंत कसं एन्जॉय केलं या स्पर्धेमध्ये? टुर्नामेंट तर खूप चांगली आहे. भिवंडीमध्ये खेळायला चान्स भेटले आम्हाला, त्याच्यासाठी टुर्नामेंटचे आभार आहोत. नाणेफेक जिंकलेले, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पाठीमागे काय उद्देश आहे आणि समोरचा जो कंप्लीट टीम आहे बलाढ्य संघ आहे भिवंडी ग्रामीणमधला, तुमचा निर्णय फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या पाठीमागे काय उद्देश आहे? कारण की प्लेयर थोडे लेट आलेत म्हणून आम्ही बॅटिंग घेतो. मग किती धावांपर्यंत जाण्याचा मानस असेल? 60 ते 65. कुणाकडनं खूप अपेक्षा असतील? केतन, पंकज, रोमित, दैवत, मनोज. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. येस सर, सर्वप्रथम आपण कल्पेश पाटीलने स्पॉन्सर केले हे ड्रिंक्स आपणास देण्यात येईल. येस अमोल पाटील आपण येऊन हे ड्रिंक्स घेऊन जायचं आहे, त्यानंतर आपण आपल्या संघाला हे वितरित करायचं आहे.
अरविंद, नाणेफेक जर जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? फिल्डिंगच घेतली असती. तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे आणि आज मला असं वाटतं की संघामध्ये एक उत्साह निर्माण झालेला असेल, पाठीराखे मोठ्या संख्येने आलेले असतील, कारण काल जी स्पर्धा पार पडली त्या ठिकाणी तुमचा संघ सेमीफायनलमध्ये धर्मराज चषक स्थानीय मैदान तुमचं होतं त्या ठिकाणी पोहोचलेलं आहे. तर मग किती धावांपणे या संघाला थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावांपर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि आमचा परफॉर्मन्स कालपासून बॉलिंगवर भरपूर निर्भर करतोय. कुणाकडनं जास्त अपेक्षा असेल या सामन्यामध्ये? बॉलिंग साईड बोलायची रितेश आहे, अमोल आहे, अविन आहे, मोहिल आहे. म्हणजे नक्कीच प्रेक्षकांना एक संघर्षपूर्ण सामना बघायला मिळेल. हो नक्कीच. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जो दुसरा ग्रामीण पूलमधला सामना होणार आहे क्वार्टर फायनल, नाणेफेक जिंकून या ठिकाणी वाघबिल संघ कर्णधाराने फलंदाजी करण्याचा निर्णय केलेला आहे. हर्षद चौधरी आपण यायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी. हर्षद चौधरी, या पहिला जो सामना झाला यामध्ये हर्षद चौधरी यांनी काय गोलंदाजी केली होती. दुसरं षटक जे हाताळलं होतं, फक्त 4 धावा देऊन 3 फलंदाज बाद केले आणि एक फ्रंटफुटला वाटणारा साईजफोर्ड खारबाव संघाला बॅकफुटला घेऊन गेला. हर्षद चौधरी आपण यायचं आहे. सामना सुरू होणार आहे. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे. जॉलीस्फोर्ड कामतगर आपण आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आणि हर्षद आपण यायचं आहे. मॅरेथॉनचा पुरस्कारही घ्यायचा आहे. येस, भगवानजी पाटील आपण पुन्हा एकदा यायचं आहे, कारण आपल्या शुभ हस्ते मॅरेथॉनचा पुरस्कार आपण द्यायचा आहे. आमचे हरिभक्त पारायण. तसेच राजारामजी पाटील आपण यायचं आहे. यस, कारण राजारामजी पाटील आपण कुठेही स्पर्धा असल्या त्या ठिकाणी उपस्थित असतात, त्यामुळे नक्कीच आपण आपले शुभ हस्ते पारितोषिक द्यायचं आहे. सर्वप्रथम जी आकर्षक ट्रॉफी येस हर्षद यांचे भगवानजी पाटील आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करतील. त्यानंतर करेश मात्रे यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं करेश क्रिएशनद्वारा हे गिफ्ट हॅम्पर आणि फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंट्स यांच्याकडनं देण्यात येणारं हे कुपन 15%साठी आपण जर चॅम्पियन झालात तर एक कुपन घेऊन जायचं आहे फ्लोरा रेस्टॉरंटमध्ये आणि 15%चा लाभ आपणास मिळेल. तो हर्षद वेलप्लेड अँड बेस्ट लक फॉर सेमीफायनल. जाऊ वेळी आपण दुसऱ्या सामन्याकडे. त्या ठिकाणी सज्ज होतील माझे सहकारी समालोचक, आमचे कॉम्प्युटर कॉमेंटेटर सुभाष धुमाळ.